So this is my kit, everybody. Traya is a combination of Ayurveda, dermatology and nutrition. Let's start with the Defense shampoo, which is dermatology. This is a 100 ml bottle. It's a high quality product और इसमें sodium lauryl and lauryl sulfates नहीं है और ना ही parabens. It's fortified with vitamin B3 and anagain. एक normal scalp पर आपने हफ्ते में 2 बार use करना है. So this bottle is often good for a month and a half. You can even strike it off from your next month's kit if you like. Usage के बाद थोड़ा dry करता है, but significantly lesser than a regular shampoo with sulfates. Rest depends from scalp to scalp. Next you have the scalp oil, which is one of the Ayurvedic components of the kit. इससे week में 2 days चम्पी कर लीजिए and leave it on for some time before shower. मुझे hair wash के बाद हमेशा softer और bouncy hair की feeling आई है because of the main ingredient that's coconut oil cooling my pitta affected scalp. इस ऑयल की बॉटल खोलने पर इसमें ये 7 ml बूस्टर ऑयल कंप्लीटली ऐड कर लें. इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ एसेंशियल ऑयल्स दैट अपलिफ्ट्स द मूड, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन. तो सीधा पॉइंट पर आते हैं. लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स दैट ट्राया वर्कड फॉर मी. लेट मी स्टेट इट फॉर द रिकॉर्ड दैट मेरा ट्राया ब्रांड से कोई एसोसिएशन नहीं है, नॉर हैव दे पुट मी अप टू दिस टास्क ऑफ मेकिंग दिस रिव्यू इन रिटर्न फॉर अ फी. आई मीन व्हाई वुड दे बॉदर विद सच अ स्मॉल टाइम यूट्यूबर विद जस्ट ओवर 600 subscribers? So be assured that I will only tell you the truth because the idea is to help out fellow men and in smaller number of cases women who are confronted by hair issues. But I'm giving no guarantee that this will work for everyone. अक्सर हम सोचते हैं बॉल्डनेस इज अ लॉस्ट कॉज, बट सबके फॉलिकल्स डेड नहीं होते, बस डॉर्मेंट होते हैं एंड दे जस्ट नीड सपोर्ट एक्टिवेटिंग. स्टिल इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सबके लिए काम करे. We'll come to that, but before that, to get some credibility going, first I'll show you some photos for a little before and after comparison along with my family hair history. So my hair had gone really thin. The slightest bit of sunlight would reveal my scalp and there was a growing bald spot at the back of my head. Thankfully that's gone now. Coming to my family track record, I'm happy to say that I had unusually dense and thick hair as a kid. उसकी वजह ये रही कि दोनों ही पेरेंट्स की फैमिली हेयर हिस्ट्री बहुत अच्छी रही थी, so I had genetics on my side. But as distinguished Dr. Judith Stern put it, genetics loads the gun, but the environment pulls the trigger. So while genetics surely helps, but you don't have to lose hope if family history is not very encouraging. Coming back to myself, my case history, I made some questionable food choices as a teenager which impaired my digestion and aggravated it, which in turn led to hair thinning and fall. A case of jaundice in my 20s further aggravated matters, and if that wasn't enough, I was a natural worrier, so mild but constant stress did further damage. I went through pitta imbalance too, which is a curse for good hair. Oh, and I've also had a hyperactive bladder, so I've been a bad sleeper for half my life. The result was erratic thinning hair and developing a bald spot here, which is gone now. Finally, I was 37 when I started using Traya, and now I'm 38, so this was about me. I thought it would be useful and important to share my case history in case somebody finds it relatable. Now, coming to the Traya Diagnose, how does it work? If you're planning, आप उनकी website पर जाइए and take the hair test. An automated form will take your personal details, ask about your present hair health, your lifestyle, and will do a scalp assessment through the photo that you click of your scalp and upload. उस हिसाब से आपका kit ready किया जाएगा. They will tell you what stage you're at. There are 7 stages of balding, and they say you have high chances of recovery until the 4th stage. Luckily, I made stage 3 and was prescribed a kit for 8 months based on my inputs in the automated form. These are monthly kits and the initial cost of my kit was 2,500 rupees. Luckily, ये cost drop होती जाती है as you need lesser and lesser products. Let me show you now what's in the box. So this is my kit, everybody. Traya is a combination of Ayurveda, dermatology and nutrition. Let's start with the Defense shampoo, which is dermatology. This is a 100 ml bottle. It's a high quality product और इसमें sodium lauryl and lauryl sulfates नहीं है और ना ही parabens. It's fortified with vitamin B3 and anagain. एक normal scalp पर आपने हफ्ते में 2 बार use करना है. So this bottle is often good for a month and a half. You can even strike it off from your next month's kit if you like. Usage के बाद थोड़ा dry करता है, but significantly lesser than a regular shampoo with sulfates. Rest depends from scalp to scalp. Next you have the scalp oil, which is one of the Ayurvedic components of the kit. इससे week में 2 days चम्पी कर लीजिए and leave it on for some time before shower. मुझे hair wash के बाद हमेशा softer और bouncy hair की feeling आई है because of the main ingredient that's coconut oil cooling my pitta affected scalp. इस ऑयल की बॉटल खोलने पर इसमें ये 7 ml बूस्टर ऑयल कंप्लीटली ऐड कर लें. इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ एसेंशियल ऑयल्स दैट अपलिफ्ट्स द मूड, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन. Then for people like me with sleep disorders, they add another Ayurvedic component to the kit, that is ghee nasal drops. इसमें herb additives भी हैं.
If I be absolutely honest, नाक में घी डालना थोड़ा uneasy और unnatural लग सकता है at first, but it's an ancient Ayurvedic practice and I won't deny कि आप suddenly खुद को थोड़ा stress free पाते हैं, even if to the extent of 10%. Overall sleep quality में significant change तो नहीं देखा मैंने, but it does help you calm down. Now we come to hair ras, an Ayurvedic concoction to balance Pitta dosha, which was in particular my problem, and to nourish hair. These are 120 tablets. इसे 2 बार लेना है, 2 pills after breakfast and 2 after dinner, adding up to 30 days. Next we have Ayurveda, again Health Tattva. These tablets increase the absorption of nutrients from food in the system, passing them on to your hair. There are 60 in the bottle, एक breakfast के बाद और एक dinner के बाद daily लेना है. Then from Ayurveda we come to nutrition science. We have the hair vitamin bottle full of nutrients for good hair. 30 capsules in total. इस nutraceutical को बस एक बार लेना है after your first meal in the morning. Finally, the most effective yet controversial component, minoxidil. बहुत से लोगों को skepticism है इसे लेकर कि जब तक यूज कर रहे हैं बाल तभी तक हैं. मुझे भी था, but here's the thing. आपके follicles को initially stimulate करने में ये काफ़ी कारगर है. देखिए प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस इसके ट्रायड में है आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन. मिनॉक्सिडिल क्लोज्ड फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और न्यूट्रिएंट्स एंड आयुर्वेदिक हर्ब्स मिसिंग हेयर फूड सप्लाई करते हैं और उसे लिवर में लॉक इन करते हैं, विच इज सप्लाइड टू योर हेयर ओवर टाइम अंटिल योर हेयर इज स्टेबल. हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल कर रहे हो, चांसेस आर यू मे ओनली फाइंड टेम्पररी सक्सेस. इसे आपने ड्रॉपर से 1 ml की वॉल्यूम में बॉल्ड स्पॉट्स पर अप्लाई करना है ट्वाइस एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डे. डू नॉट वॉश हेयर बिफोर 4 hours ऑफ एप्लीकेशन. अपने कोर्स के खत्म होने के बाद मैंने मिनॉक्सिडिल डिसकंटिन्यू करा कुछ समय तक टू सी इफ आई स्टार्ट लूजिंग हेयर अगेन. लकीली आई डिडंट बिकॉज आई हैड द नीडेड फॉलिकल्स. दे वर जस्ट डॉर्मेंट और उन्हें वो बूस्ट मिल गया जो चाहिए था. अक्सर हम सोचते हैं बॉल्डनेस इज अ लॉस्ट कॉज, बट सबके फॉलिकल्स डेड नहीं होते, बस डॉर्मेंट होते हैं एंड दे जस्ट नीड सपोर्ट एक्टिवेटेड. मे बी ये रिजल्ट्स किसी और में ना दिखें. द रीजन कुड बी genetics or an advanced stage of hair loss wherein the follicles close up completely instead of being dormant. I'll be absolutely honest with you though, some time ago, just out of insecurity कि दोबारा bald spot ना आए, I resumed only the minoxidil part of the kit. I figured जब इसके proven results हैं ही, अगर मुझे कई साल लगाना भी पड़ता है तो at least मैं अपने बालों की life maximize कर सकता हूँ. Better to be regular than bald, right? But that's just me. I'm sure others may not see it the same way. Finally, जो लोग high blood pressure से suffer करते हैं, they should be cautious with minoxidil and definitely consult their doctor once. Although topical minoxidil जो सीधा स्कैल्प पर लगता है, ओरल मिनॉक्सिडिल जितना अफेक्ट नहीं करता ब्लड प्रेशर को, बट हे, यू कैन नेवर बी टू केयरफुल. So bottom line, if you've had good family hair and you're suffering for other reasons, you may want to try out. If it is a genetic issue, don't lose hope. It may take longer and there's no harm in trying, right? But before you grow older and become spiritual, youth में एक try तो बनता है. With that positivity, I give you my thanks for watching. I'll see you very soon.